Hello and welcome to a very special show of the NDTV-Coca-Cola Support My School campaign. Now, this is a campaign that has been trying to revitalize poor and dysfunctional government schools across the country for 3 years now. We've been trying to inspire students to return to classrooms and to bring back their interest in studies, in sports, and also to dream for a future. Now, this is a special day for us as we've got together to celebrate a milestone. Our Support My School campaign has now given a new leader of life, a new lease to its 500 schools. So 500 schools have been touched now by this campaign. 500 schools have been transformed, and that's a matter of great pride for us. And we have some very special people with us to take us through the next wave of what we are planning to do. And they need very little introduction. Farhan Akhtar, director, actor, singer. Saurav Ganguly, somebody else who needs very little introduction. Please put your hands together for him. And Venkatesh, CEO of Coca-Cola, who's been our partner in all that. Let me just start with you. 500 schools. Would you have bet on that a couple of years back? I think when we started this program, we never imagined it would gain so much scale. And it started from very small, humble beginnings. And today, to see we've completed 500 it's an incredible achievement, incredible milestone. So before we go any further, let's just recount the journey of Support My School. This is an initiative that NDTV and Coca-Cola are now launching in an area that really needs it. We all know how important education is in our country. The original intent was based on the insight that girls are dropping out of school because there were no separate toilets for them. But once you start with getting the toilets into the schools, you realize that you also need to have drinking water, you also need to have playgrounds. अटेंडेंस बढ़ी है सर, वो बच्चे क्या है घर जाना ही नहीं चाहते। तो इस साल 75 आए, अगले साल हो सकता है 150 बच्चों का मेरे यहाँ स्ट्रेंथ और आ रुके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। मैं कहूँगा ये 100 स्कूल है, ये मेरी फेवरेट सेंचुरी है। So happy to come to the school today because I've been hearing that Support My School campaign that is happening, which is a great initiative. My old school teachers have written to me saying they are so impressed by this campaign. So that really made me feel great. ये आप लोगों के ही से है, आप लोगों ने वर्क किया, हम लोगों ने उसको जो है एग्जीक्यूट किया और ये नतीजा आपके सामने है कि आज जो है हर जगह पर जो है इन चीज़ों को जो है प्रोत्साहित किया जा रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है। रुके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। Thank you all so much for having been with us. Ambitious new target, 1,000 schools is the target now for Support My School, and we will keep on working for that. रुके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। Farhan, let me turn to you next. Obviously, the target which we are now trying to do for is 1,000 schools. Now, the basic premise behind the Support My School campaign is something very simple. There are certain basic facilities that are the birthright of every child. Go to a school, have toilets there, have separate toilets for girl children. These are not things that are too much to ask for. Playgrounds, libraries. Clean drinking water.
Yeah, Yes, that's- is another. Yeah. And it's rather sad that this industry doesn't exist right now in a large number of schools. Yeah, absolutely. I mean, the fact is that we are very fortunate that we've grown up in a city or in a place, or fortunate to have parents who could send us to schools where we didn't really need to think about these issues. You know, but the more you travel and the more you go to various places and you see the condition of a lot of schools. And apart from the fact that infrastructure is lacking, there's a certain sadness that the children experience of having to go there, and it's very difficult to learn and to learn anything and to retain that knowledge if you're learning it in an environment that you're not really happy being in, which is one. It's also affecting the amount of girl children that go to school, because when they don't have toilets that they can use, more often than not they end up either going back home and not returning to school, you know, or then the parents don't send them. So yeah, there are many issues. तो अगर आपको जो हमारे राजनेता हैं, जो लोग सरकार चलाते हैं, अगर उनसे कुछ आपको कहना होता तो क्या कहते हैं आप? मैं बस यही उम्मीद करूंगा कि जो सरकार है कि इन मामलों में जो स्कीम्स उन्होंने बनाई हैं वो एक एम्फेसिस डाले कि वो ठीक तरह से इम्प्लीमेंट हो, ताकि जो एक रिजल्ट वो भी चाहते हैं और हम सब चाहते हैं वो हम सबको प्राप्त हो। सौरभ, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं फरहान के साथ बिल्कुल सहमत हूँ और मैं एक्चुअली गया हूँ स्कूल्स में। आई विजिटेड अ स्कूल इन कलकत्ता। ये जो फैसिलिटीज़ है जो फरहान ने कहा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक क्लेंडलीनेस होना ज़रूरी है। बच्चे आते हैं, जैसा उन्होंने कहा कि हम जब बड़े हुए हैं तो अच्छे स्कूल्स में गए हैं, तो ये चिंता हमें नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन हेडमास्टर सब भी है यहाँ पे, मैंने उनको देखा है। ये स्कूल उन्होंने अपने हाथों पे बनाया है और ओवर द इयर्स ये सब कुछ प्रिजर्व करते हैं। सिर्फ पानी नहीं, पानी तो होना भी चाहिए। वो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करते, जिससे कि जो बारिश का पानी है वो स्कूल में कैसे यूटिलाइज हो, और ड्रिंकिंग के लिए पानी, हाथ साफ करने के लिए पानी। और एक्चुअली जब आप जाएंगे उन स्कूल्स में तो आपको पता चलेगा ग्राउंड के प्लेग्राउंड्स, अदरवाइज दे कांट बिकम द नेक्स्ट सौरभ गांगुली। नहीं, ग्राउंड के फैसिलिटीज़ भी बढ़ रहे हैं। और देखिए आजकल शहर में तो बड़े स्कूल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है जहाँ पे प्लेग्राउंड की फैसिलिटीज़ हो। जब आप थोड़ा सा शहर से दूर जाएंगे तो वहाँ पे आपको जगह मिलता है, आप प्लेग्राउंड्स बनाते हैं। और जो स्कूल में मैंने गया वहाँ पे भी प्लेग्राउंड्स बन रहा था, लेकिन फंड्स के लिए थोड़ा सा रुक जाते हैं काम। जैसा फरहान ने कहा, इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। और मैं स्वच्छ भारत के साथ जुड़ा हुआ हूँ, हाल ही में जुड़े। और जो सारे कॉरपोरेट्स हैं जो इस चीज़ को आगे लेके जाते हैं, कोका कोला और बहुत सारे जिसका नाम हमें पता चलेगा आज शाम को, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहिए, क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूशन से इनके लाइफ अच्छे होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है।